पहलवान साहब लगते तगड़े हैं भाई साहब। तो स्वागत आप सब लोगों का आज के दिन हमारे 16वें ब्लॉग में। तो आज हमारा 100 डेज चैलेंज के हो चुके हैं 16 दिन। तो आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे कि 15 दिन में हम कैसे कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेग भी मार ली और कल थोड़ी कम मार दी चेस्ट, क्योंकि लेग के वजह से बहुत दर्द हो रहा था। सैटरडे को लेग मारी। तो हम आ चुके हैं 16वें दिन में। आज देखते हैं हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. या गुरुजी यहाँ लटकते हुए भाई साहब, मुझ पर तो पुशअप मारे ना यहाँ में लटकने वाले।
पूरी सीधी होनी चाहिए, तू अपने हिसाब से देख सही लग, ठीक है। अब ऐसे उठा के ऐसे लगा। तो आज हम मारेंगे फुल, मतलब सारी प्लेटों पे। ये एक्सरसाइज थोड़ी आसान सी लगती है क्योंकि पैरों का सपोर्ट भी मिल जाता है और फिर मशीन भी अंदर से दे देती है सपोर्ट। अब मैं जाता हूँ। ये आए हमारे पहलवान साहब। कुछ कहो पहलवान साहब, लगते तगड़े हैं भाई साहब। अब आ चुके हैं हमारे गुरुजी। यह है हमारा भाई। आज हम दोनों ने एक साथ मारी है सारी एक्सरसाइज और एक ही बहुत सारी एक्सरसाइज करी क्योंकि कल बहुत कम करी थी, आज बहुत ज़्यादा करी है। तो हम मिलते हैं अब अगले दिन। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो बाय बाय, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।